Hi guys, welcome back to another episode of Walking Nomads. और आज का ये एपिसोड बहुत खास है बिकॉज आज हम एक ही कॉइन के जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने एंजॉय करी एक लोकल डिश जिसे अस्कलू कहते हैं, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही मॉडर्न प्लेस जहाँ पे वुड फायर्ड पिज़्ज़ा सर्व किया जाता है, विच इज़ अगेन इन कसौली। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है जहाँ पे हम अस्कलू ट्राई करेंगे, हम उस प्लेस पे पहुँच चुके हैं। हमने करीब 20 किलोमीटर ट्रैवल किया कसौली से। वी हैव अ फ्रेंड्स हाउस हियर जहाँ हम पहुँचे हैं। हमने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया that was very authentic and it gave a very good feeling, very wholehearted feeling when we visited here. और हमारा यहाँ आने का जो सिंगल मकसद था वो था अस्कलू ट्राई करना, बिकॉज हमने सुना तो था अस्कलू के बारे में बट वी हैव नेवर टेस्टेड इट। सो फाइनली वी आर हियर टुडे एंड वी आर गोइंग टू ईट अस्कलू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड जो इसको बनाने की जो प्रोसेस है, it is in itself very unique. So they start with oiling एक मतलब पत्थर का एक सांचा बना हुआ है जिसमें पहले ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, और ये जो डिश है ये आग के ऊपर ही बनाई जाती है। एंड देन उसके बाद इसमें राइस फ्लावर जो होता है और 2-3 फ्लावर जो मिक्स करके एक बड़ा यूनिक सा बैटर बनाया जाता है। एंड देन दे पोर दिस बैटर इनटू दिस पत्थर का जो सांचा है उसमें डाल देते हैं। एंड दिस इज वेरी यूनिक दैट यू डोंट सी मच सिमिलैरिटी इन अदर इंडियन कुजीन्स लाइक दिस, बट येस इन कोरियन कुजीन आई हैव सीन वहाँ पे भी ऐसा कुछ बनाया जाता है, दैट इज ऑल्सो राइस फ्लावर। सो वो एक सिमिलैरिटी है, बट इंडियन कुजीन में मैंने ये सिमिलैरिटी नहीं देखी है, which is in itself very you can say wholehearted feel that it gives you. And then while Didi was making Askalu, we visited her mother-in-law. She was making makki ki roti for us, and because we were going to eat Askalu, and उन्होंने क्या करा, उन्होंने मक्की की रोटी बनाई and then they packed it so that we could take it with us, वापस ले जाएं अपने घर पे। So that whole thing and whole you can say जो hosting है वो बहुत यूनिक थी, and everybody was very happy that we have visited, and which kind of made us feel happy. So finally I think हमारा जो अस्कलू है वो रेडी हो गए थे, and then when I tasted it I felt like very light at the same time, although there was so much ghee in it, but the experience was amazing. And then by the time we ate the afternoon, we decided that we will go back home, and this was our short trip to Chandi where we tasted one of the best Himachali food. And now let's go back, and what we are going to do now after going back is we will visit one place which is newly opened. My friend Neil has opened a new cafe in Kasauli where he is serving amazing pizzas. When we shifted to Kasauli, तो हमें उस टाइम पे कुछ ज़्यादा यहाँ खाने की options नहीं मिलती थी to eat out and enjoy. But slowly I am looking at a trend that very nice places are opening here in Kasauli. And one of that place is this place. It's called Neil's. And they are serving one of the best pizzas that I have ever ate. So Neil is a local, and he thought that he will open a pizza place and it must be authentic.
and he then started his cafe, and now it is one of the best cafes in Kasauli. And if you are there in Kasauli, then you should not miss this cute little cafe where he is serving one of the best pizzas that you will ever eat. And this pizza was just perfect. हर चीज ऑथेंटिक है, आपका जो बेस है वो यहीं बनाया जाता है, एंड देन द बेस्ट पार्ट इज दैट नील इज गेटिंग द फ्रेश mozzarella directly supplied from Chandigarh. So that is the center focus of this pizza, and which is why you should try this when you are in Kasari. So this is it for our this vlog, and I hope you must have enjoyed, and we will meet you again next episode, where we will show you that how we enjoyed some unique food in Amritsar, because we are going to Amritsar. And stay tuned, and we will see you in the next episode.